So I'm done with the treatment and you guys can see the results. So ये basically बाकी straightening और smoothing जैसा नहीं है. What's up guys? So I'm going for a nanoplasty treatment, which is something like for your hair to make to let the frizz go out. So मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं. And I'm very tired because weekends are usually the ones जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सोना पसंद करती हूँ. बट आज थोड़ा जल्दी उठ के रेडी होके निकलना था, तो या इन केस में मेरा फेस सोलन लग रहा है तो एक्सक्यूज़ मी. अभी ऑन द वे है, ट्रैफिक है, 23 मिनट्स लगेगा. आई वाज सपोज्ड टू बी देयर बाय 11:30 एंड इट्स 11:29. वाओ, आई एम लेट एज यूजुअल. सो सलोन में मिलते हैं. Hey guys, so I finally reached to the salon, and before starting the procedure we thought of having chai because chai is very important. And this is a salon. The look and feel is very luxurious. That's what I have noticed. And a pop of yellow is actually tempting me, or like quite a bit catchy I would say, but not shocking. A very pretty yellow. So I'm doing a hair wash right now. This is the step number 1 and I'll keep updating you as the procedure goes. So after shampooing my hair, they did a blast dry so that they can apply the cream on a dry hair. And these were the products: cleanser, shampoo, conditioner and the main product. And that's me. सेग्रीगेट करेंगे एक एक सेक्शन को और क्रीम लगाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर वो रख देते हैं आपके हेड पर. So we are done with the cream application, and on top of that we have put a clean wrap. The treatment is going to be on my hair for 45 minutes. We have to wait. That means I'm going to get bored or probably I'll be watching something on YouTube. Talking about the experience so far, no sensation at all. कुछ itchiness नहीं है, neither on scalp or ear area, no eye burning, nothing like that. Very comfortable. But then the sensation usually happens when you're doing ironing, so I'll let you know about that once the ironing starts. And yeah, so we have to wait for 45 minutes. Instagram. तो आफ्टर 45 मिनट्स वो लोग शीट हटाते हैं एंड ब्लो ड्राई करते हैं. नाउ दिस टाइम इट्स ब्लो ड्राई सेक्शन बाय सेक्शन. उसके बाद वो लोग स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर देते हैं अगेन. बहुत पतला पतला लाइनिंग लेके बेसिकली फोकस करके करते हैं. एंड 10 मिनट्स के बाद ही वो लोग उसको वॉश कर देते हैं. अब वॉश करने के बाद नॉट गोना डू एनीथिंग, इज जस्ट दैट दे विल अप्लाई अ बिट ऑफ सीरम एंड विल ब्लास्ट ड्राई. तो जो भी आप मेरा बाल देखोगे बेसिकली वो सिर्फ ब्लास्ट ड्राई, बेसिकली एयर ड्राई होने के बाद कैसा दिखेगा आपको वो देखने को मिलेगा, नॉट अ ब्लो ड्राई. So I'm done with the treatment and you guys can see the results. So ये basically बाकी straightening और smoothing जैसा नहीं है, ये आपको उसी दिन wash करना होता है. And this is the result after the first wash. It's quite straight. I wouldn't say like pokey straight. It's very smooth, and apart from that, my hair looks so manageable, so soft, like silky soft. Of course, 2-3 washes के बाद मैं ज़्यादा अच्छा review दे पाऊँगी, so which I'm gonna do. But yeah, this is how the result looks. Also, the salon from where I've done this treatment, मैं उसका पूरा contact link सब देने वाली हूँ. आप प्लीज़ आना, और जो ओनर है उनको बोला कि पायल के उससे आया हो तो पक्का आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट में हेल्प कर देंगे.